Hello friends, welcome to the channel. The previous video रे हमें साइंस पेडागोजी रो 20% डिस्कस करते तो आज पुणी 20% अच्छे चैलेंज तो डिस्कस करवा. The first question होची which of the following statements describes the nature of science. Nature of science को कोटा बेसी कोटा सूट करे. Scientist options देखो. Scientists are totally objective in their work. Scientific method is only guide हेला नेगेटिव हो. तापर देखिए साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन द ऑब्जेक्टिव टोटली ऑब्जेक्टिव अच्छे तो गोटे कन्स्टांटली गोटे जिनस को मार्क कर तो यहाँ नेगेटिव हम. देन साइंस इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ को लेकिन साइंस किसी फंक्शन करे. सो ऑल ऑफ द एतिक सब क्वेश्चन ऑप्शन देखला पर तो गोटे बचुची साइंस इज सोशल इन नेचर. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ डी. तापर देखो क्वेश्चन 2 cognitive validity of a science curriculum means. cognitive validity कहले साइंस करिकुलम रे कौन बुझाए. गोटे हूँ डाइल्यूशन गोटे हूँ डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट, इंक्लूजन ऑफ appropriate fun element, देन हूँ इंक्लूजन ऑफ हाउ कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम और तापर हूँ अडाप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स. तो कॉग्निटिव वैलिडिटी कहले आम adaptation of content as per the cognitive level को नहीं कि cognitive validity को करिकुलम में मीन्स कराए. तो देखो ना करेक्ट ऑप्शन हो डी. क्वेश्चन नंबर 3 according to NCM 2005 which of the following is recommended in upper primary upper science curriculum. ऑप्शंस आर देखो अच्छे concept should be कौन देखो concept should be linked making sense of everyday experience एटा हे पारे. तापर अच्छे concept should be arrived from activities and experiments. concept should be taught through disciplinary approach. along with concepts laws and theories need to be introduced. तो ओवरऑल कौन देछि एनसीएफ को लेके तो एनसीएफ नेले कट ऑप्शन हे छिबो ए एवरीडे एक्सपीरियंस को लेके. ए भी हम सॉरी ए भी हम तो एमती सब सेटेड क्वेश्चन आसे देखो आंसर थिला ए हम बी हम एंड डी हम. देखी दिखाँ टे एटा तो फर्स्ट कहली ए हम देन बी देथिला बी एक्टिविटी एक्सप्लेनर डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं तो एटा लॉज और थियोरीज को भी नहीं कि हे पाए. सो एटा हम ए बी एंड डी. 4 नंबर को देखिए which validity of a science curriculum requires that learners are engaged in acquiring methods and processes that leads to scientific knowledge. Cognitive validity, content validity, process validity, environmental validity. तो यहाँ पर देखो ऑप्शन देखा दिस ऑलरेडी प्रोसेस वैलिडिटी. तापर 5 कहवा व्हाट इज द हिस्टोरिकल वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम. ensuring historical experiments repeated by students, making students memorize हेले negative, enabling students to appreciate how scientific concepts evolve over time. तापर देखिए giving dates of discoveries in textbooks. तो ऑप्शन ए हम सॉरी ऑप्शन सी हो enabling students to appreciate how scientific concept अच्छा ठीक अच्छे हिस्ट्री अच्छी हिस्टोरिकल वैलिडिटी थिला सो दैट एवल्व ओवर टाइम गोटे टाइम पीरियड चेंज है केमी हिस्टोरिकल वैलिडिटी चेंज हुए साइंस करिकुलम. सो दैट एटा सी हम वो भूल कहली ए जो कहली देना एन्श्योरिंग हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट आर रिपीटेड बाय स्टूडेंट्स केमी हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट निजे कर विदाउट जड़े टीचर हो कि किसी इंस्टीट्यूशनल हो इंस्टीट्यूट को न नहीं गोटे टीचर गोटे स्टूडेंट के भी एक्सपेरिमेंट्स करें ठीक अच्छे स्पेशली इन स्कूल लेवल. सो दैट सी हम आंसर. तापर 6 को आसले which of the following strategies is useful to understand conceptual gaps in learners. conceptual gaps को
कौन देती कनसेप्ट गैप्स को अंडरस्टैंड करने कौ स्ट्राटेजी नाम दरकार तब देखिए गोटे कनसेप्ट मैप्स गिविंग होमवर्क रेगुलारली ऑर्गेनाइज क्विज सेशंस तब ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स कोटा हम कहूँ तो देखिए तो कार्ड ऑप्शन कौन अच्छी ना यूज कनसेप्ट मैप्स द्वारा आम गोटे पिला को कनसेप्टुअल जो कनसेप्ट रिलेटेड जो गैप्स जोटा जो थाए से फुलफिल कर तब हूँ सेवेन अच्छे व्हाई शुड साइंस टीचर आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस डाइवर्जेंट मीन्स जोटा गोटे दीटा थिला हमर गोटे डाइवर्जेंट गोटे कन्वर्जेंट हूँ क्लोज माइंडेड मैंने सी रू क्लोज मन रखिए और डाइवर्जेंट मान ओपन माइंडेड माने गोटे क्वेश्चन पचारे जार कि बहुत सारा आंसर्स तार रिलेटेड थी एमती पचारे जीवन कि लाइक गोटे एग्जाम्पल दियाले 2 4 8 तो यहाँ हूँ क्लोज एंडेड किंतु जदि मत टू द्वारा नहीं कि केतेटा मल्टीप्लिकेशन आम कर लाइक सेमती किसी मैंने 2 को लेकिन 2 मल्टीपल्स केमती केते तो सेटा हो जाए ओपन एंडेड सो दैट से वाई कहीं करवा दरकार कहीं करवा देखो स्टिमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग देन हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटेजीज करेक्ट आंसर नुह टू हेल्प असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन ए लर्नर क्रिएटिव बिहेवियर इन ए लर्नर करवा ना डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटेजीज ना क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट करने को एटा ऑप्शन ए हम सी भी हम एंड डी भी हम ओके 8 नंबर टाइपिंग किसी मिस्टेक अच्छे मैं चलो 9 नंबर देखिए 9 नंबर अच्छी टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेकअप साइंस ए टीचर मे अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी एक्सपेक्ट गोटे गर्ल्स को माने गोटे साइंस नामापाई को मेथड्स फॉलो करवा दरकार स्ट्रेटेजी आ भर कौटा छाड़ी ऑलरेडी आंसर दिशी जाइए देखो वुमेन साइंटिस्ट को आने क्लासरूम को एनकरेज कर जेंडर न्यूट्रल बेसिस दुईटा को इक्वालिटी दबा मोर ग्रुप वर्क एमंग स्टूडेंट्स ये एनकरेज करवा कि सिंपलर टॉपिक्स इजी टॉपिक्स दबानी जेहेतु गोटे फीमेल थी कि वुमेन थी सेटा ये सुटेबल नुहे सो दैट ऑप्शन डीटा एलिमिनेट करा तो आंसर हो तो 10 हूँ देन 10 आसूँ 10 हूँ ड्यूरिंग ए डेमोन्स्ट्रेटर इन ए साइंस क्लासरूम स्टूडेंट प्रीडोमिनेंटली लर्न थ्रू व्हिच सेंसर मेथड तो देखिए दिखाँ विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक विजुअल एंड काइनेस्थेटिक जोटा खेल रिलेटेड सॉरी बॉडी लैंग्वेज जोटा नहीं कि तो सो दैट विजुअल एंड ऑडिटरी हम तापर 11 देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्पाइरल अप्रोच इन टीचिंग साइंस ऑप्शन सर देखिए टीचिंग a topic fully once and never revising it revising topics are increasing level of complexity teaching on the related topics in rotation focusing only the fundamental concept throughout the year तो करेक्ट ऑप्शन कौन हम देखो कौन अच्छी ना बी अच्छे बीटा हम तापर 12 क्वेश्चन which pedagogical approach is most clearly exemplified when students predict outcomes जोटी स्टूडेंट आउटकम्स को प्रेडिक्ट करते एक्सपेरिमेंट करते रेकॉर्ड भी ऑब्जर्वेशन डिस्कस अनामोलीज एंड रिफ्लेक्ट ऑन रिजल्ट्स देखो कौटी इनक्वारी ड्राइवन एक्सपेरिमेंटल हम ना रोड रोलिंग हम एटा हेनी लेक्चर बेस्ड हेनी तो बाकी रहा दुटा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन विदाउट स्टूडेंट इंटरवेंशन इनक्वारी ड्राइवन एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ऑप्शन सी हम देखो सी एमतीर पैटर्न सेटेड था मुझे मेंशन कर साइड सेटेड हो कि ओटेड हो जेहेतु एवं साइंस पेडागोजी टी आप्लिकेबल बेस्ट आसूँ लाइक आम आगे प्रीवियस इयर्स को देखिले आम ओनली खाली सिंपली आसी जाए किसी क्वेश्चन किंतु एबे बहुत आप्लिकेबल होकर आसूँ गोटे धर नेचर ऑफ साइंस से पचारूनी कौन कहले तार मीन्स कौन ये सब कौन कौट आप्लिकेबल किंतु एबे से बेस को लेकिन किसी गोटे एग्जांपल लेकिन क्वेश्चन पकाऊँ तो देखो
which of the following is a trusted area of physical sciences? Alternate source of energy, water source management, applied optics, और अच्छे all of this. এটা তো all of this হবে। তারপরে হচ্ছে if a student removes a metal block from water and immediately weighs its inspiring balance after immersions, why this is incorrect and experiment to find density related questions physical science, because the water level was not noted first, because the block was touching to sides of the cylinder, because weighing should be done before immersion, because weighing immediately upon removal gives wrong mass due to water cleansing to the block। आर ऑप्शन देखो करेक्ट ऑप्शन कौन हम डी रहा। देन which of the following is the correct description of process validity? Age appropriate content, engagement in scientific methods, historical context, analysis placing science in environmental constant। तापर है कौन देखो आंसर आर बी। 16 अच्छे देखो कौन which of the following is true about environmental validity? Options देखो science curriculum should focus on laboratory, only laboratory एटा negative, science content should be placed into wider हेई पारे, science textbook only is historical एटा negative, science assessment should not consider environmental issue, that option B होगा। 17 ना अच्छे कौन देखिले 17 रे अच्छे which of the following is correct view on how science should be taught according to NCF? केमिति पढ़ेबा दरकार शिखिबा दरकार। लेक्चर एंड टेक्स्ट बुक होचे हबनी, एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स अच्छी पॉजिटिव, मेमोराइजिंग नुह, अवॉइडिंग नुह, तो बी। व्हाई इज द नेचर ऑफ साइंस कंसिडर्ड टेंटेटिव? कौन पाए ना because scientific theories never change, because once law is proved cannot be questioned, because scientific knowledge can change with new evidence, तो ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर आसला which of the following best reflects a teacher's role in a science classroom to build appreciation of our science? Providing answer and facts, तापर देखिए इग्नोरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन एटा इग्नोर करवा कथा नुह, देन देखिए एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क व्हाई एंड हाउ, ओनली यूजिंग टेक्स्ट बुक एग्जांपल्स, टेस्ट रियल लाइफ नाही तो एटा बहुत नेगेटिव हिजो। आंसर एंड फैक्ट्स खाली आंसर एंड फैक्ट्स करवा गोटे क्वेश्चन को नहीं सेटा भी नुह, देन देखिए डिसिप्लिन मेंटेन करवा, तापर सी एटा मे बी सी हबो देखिबा, हां सी अछि। तापर देखिए रिमेडियल टीचिंग इन साइंस पेडागोजी रिफर्स टू teaching advanced students only, reteaching concepts to students who did not understand initially, skipping experiments to save time, reducing the number of science classes। आम तो रिमेडियल रिड्यूस करवानी रिटीचिंग करवा, रिमेडियल मान रिटीचिंग यहाँ ऑप्शन बी। देखिए कौन अच्छे बताइए बी। तो 20 क्वेश्चन रहा आप रिविजन करने सब हेल्पफुल हम, तो सीटेट अच्छी आगे डेट अच्छी देखो, प्रैक्टिस करूँ।